Hello everyone. Today our topic for discussion is Directive Principles of State Policy. जो हमने इससे पहले इसका वीडियो बनाया था पार्ट फर्स्ट डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस वीडियो में हमने इसको कंप्लीट इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया. सो टुडे वी विल अगेन डिस्कस इट. एज वी नो दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी is mentioned in part 4th of Indian Constitution. As we know that कहाँ पे mention है Directive Principles of State Policy, part 4th of Indian Constitution, from Article 36 to 51. The Constitution makers, they borrowed the concept of Directive Principles of State Policy from Irish Constitution. From Irish Constitution. As we know that the Constitution makers of Ireland, they copied, उन्होंने copy किया था कहाँ से? From Spanish Constitution. From Spanish Constitution. And these directive principles state policy, these are the guidelines, a list of guidelines, a list of directives, list of guidelines or list of directives. And क्या है? Promotion of the welfare state, promotion of the welfare state, and also to establish social and economic democracy in country, to establish economic and social democracy in country. These directive principles state policy, they are justifiable in nature. They are justifiable. They are non-justifiable in nature. They are non-justifiable in nature, means for their violation, Supreme Court is not responsible for their enforcement. So we see that the directives of state policy, they are classified into three groups. First, socialist principles, Gandhian principles, socialistic principles क्लासिफाई किया गया है इनको 3 कैटेगरीज में. बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है अबाउट देयर क्वालिफिकेशन. ठीक है ना. सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, थर्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. नाउ अगर हम बात करेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में, वी सी दैट द आर्टिकल जो मेंशन है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, वो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, याद रखना ये आर्टिकल 38, 39, 39A, 39A, 41, 42, 43, आर्टिकल 41, 42, 43, 43A, 43A and 47. Socialistic principles, articles, clear. सोशल गांधी प्रिंसिपल्स के अगर हम बात करेंगे, गांधी प्रिंसिपल के बारे में आर्टिकल्स क्या क्या है? गांधी प्रिंसिपल आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43B, 46, 47, 48, ये आर्टिकल्स गांधी प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन कौन सा आर्टिकल है? 44, 45, 44, 45, 48. याद रखना 44, 45, 48, 48A, 48A, 49, 50, 51. ठीक है ना. क्लासिफिकेशन. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सब आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. सो एज वी नो दैट सो फार द आर्टिकल 36 इज कंसर्न. अगर हम आर्टिकल 36 की बात करेंगे, आर्टिकल 36 अगर इसको डिफाइन हम करेंगे, सो आर्टिकल 36 डिफाइंस द स्टेट. क्या डिफाइन करता है आर्टिकल 36? स्टेट. इट हैज द सेम मीनिंग एज गिवन इन आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डिफाइन स्टेट. याद रखना डिफाइन स्टेट. It has same meaning. It has same meaning as given
आर्टिकल 12 of part 3rd of Indian Constitution. Article 12 of part 3rd of Indian Constitution. So we can say that Article 12 of Indian Constitution, fundamental rights. Define क्या करता है Article 12? State. So Article 36 also defines the state. Also defines the state. So we can say that the meaning of Article 36 and meaning of Article 12 are same. Both are same. Article 12 also defines state. Article 36 also defines state. ठीक है ना? Now Article 37. इसके बाद क्या है? Article 37. So Article 37. Article 37. The directive principles of it says that states that the directive principles are fundamentals. क्या है? Fundamentals. The directive principles. Directive principles. The directive principles. The directive principles are क्या है? Fundamentals in the governance. Fundamentals in the governance of the country. In the governance of the country. Fundamentals in the governance of the country. So it shall be the duty. क्या है फिर? It shall be the duty. It shall be the duty of the state to apply. Duty of the state. क्या है? किसकी duty है? State to apply. क्या apply? All these guidelines, to apply these principles in making laws. याद रखना. To apply these principles. In making laws. क्या है ये? Article 37 क्या डिफाइन करता है? That the state, there shall be the duty of the state की ड्यूटी है क्या? ड्यूटी की to apply these principles. कौन से principles? List of guidelines, directive principles of state policy. क्या है directive state में? List of guidelines for legislative wing and executive wing. While making, जब वो लॉ बनाएगी, लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए गाइडलाइंस होती है. किसके लिए? Both legislature and executive. So it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Clear? So we can say that this Article 37. It also Article 30 contains. We can say that it also tells about the non-justifiability nature of directive principles of state policy. Clear? Article 37 contains क्या करता है? Contains clause. It contains clause which mentions, क्या mention करता है? The non-justifiability of directive principles. So we can say that Article 37 also contains a clause. Article 37 also contains a clause which mentions the non-justifiable nature of directive principles of state policy. Article 30 is now Article 38. अब क्या है? Article 30. No, Article 36, 37. Now the Article 38. This Article 37 is known as the cornerstone. याद रखना. क्या है ये? Article 37 क्या है? Article 37 is known as the cornerstone of the directive principles of state policy. ठीक है ना? Now Article 38. अब क्या है? Article 38 socialistic principle. क्या है? Socialistic principle. क्या डिफाइन करता है? The state shall strive to promote. याद रखना. The state
shall strive to promote. The state shall strive to promote the welfare of the people. The welfare of the people. The welfare of the. So it's the duty of the state to promote, to work for the welfare of the people, for the work for the welfare of the people by securing a social order. By securing a social order. By securing a social order through justice. Through justice. Political justice, economic justice and social. Political justice, economic and social. And to minimize inequalities and also to minimize inequalities. क्या है? मिनिमाइज क्या करना? इनइक्वालिटीज in income, status, in income, states, facilities, and we can say that opportunities. So it's a key stone of direct principles of state policy. क्या है? आर्टिकल 30 की स्टोन है, याद रखना. Key stone of directive principles of state policy. Article 38. The state shall strive to promote the welfare of the people, securing a social order through justice, political, social, and economic justice, and also it's the duty of the state to minimize inequalities. In income, states, facilities, and opportunities. Now the article 39. क्या है? Article 39. Article 39. So the Article 38 क्या है? Keystone of the directive principles of state policy. Article 39. The right to educate, means of livelihood for all citizens. Article 39 क्या है? Socialist principle. Socialistic principle है. The right to educate. क्या है? The right to educate. The right to educate means of. The right to educate means of livelihood for all citizens. Means of livelihood for all citizens. All citizens. Equal pay for equal work. Equal pay for equal work. Socialistic, important socialist principle. Equal pay for equal work for both men and women. Both men and women. याद रखना. So क्या है? Article 30. The right to educate means of livelihood. The right to educate means of livelihood. The right to educate means of livelihood for all citizens. Equal pay for equal work. Equal pay for equal work for both men and women. So you cannot deny women. Clear? So equal pay, equal wages. Clear? For equal work. Or both men and women are equal before law. Before law, both. So all people are equal. There is a duty. It's the right to educate. It's the duty of the state. It's the duty of the state. ठीक है ना? Now Article 39A. A means amendment. Amendment of Constitution. अमेंड हुआ है आर्टिकल 39. फिर अब क्या है? आर्टिकल 39A ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. क्या? आर्टिकल 39A डिफाइन व्हाट? स्टेट्स व्हाट? प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पीपल. प्रमोट इक्वल जस्टिस. प्रमोट इक्वल justice and
free legal aid, free legal aid, and free legal aid to the people, to the people, to the people. ठीक है ना? क्या है? आर्टिकल 39 क्या डिफाइन करता है? प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पीपल, टू द पीपल. नाउ आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल, याद रखना. आर्टिकल 40 क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल. आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, याद रखना. टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, organize village panchayats. Every village panchayat राज सिस्टम लेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड. फर्स्ट अगर हम पंचायत राज सिस्टम की बात करेंगे, कौन सी स्टेट है? राजस्थान, जहां पे पंचायत राज सिस्टम स्टार्ट हुआ इन 1959. फिर फाइनली उसी 1990 में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ, सो पंचायत क्या उनको मिले? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई. ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल दे गॉट पावर्स. पंचायत 73rd अमेंडमेंट जब हुआ. ठीक है ना? नाउ क्या है? गांधी टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एट द यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एज ए यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ, सो डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट मीन्स डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल. डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल. आर्टिकल 41, आर्टिकल 41. आर्टिकल 41 क्या है? दिस आर्टिकल 41 इज आल्सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल. क्या है? सोशलिस्ट. राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क. क्या है? राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस इन द इवेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. पब्लिक असिस्टेंस in the events of unemployment, in the events of unemployment, right to work, right to work, public assistance in the events of unemployment means income of unemployment, old sickness, income of unemployment, old sickness, we can say old age. We see that there should be the right to work, right to education, right to public assistance, right to public assistance. So this was all about, we have discussed article 36, 37, 38, 39, 40, 41. In next video we will again discuss from, we can say article 42, 43. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही. वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए.